ओके, सो आज मैं और दो प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो कि CSIR नेट जुलाई में आया था। और ये दो प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। और ये IIT जैम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप BSc के कंसेप्ट पे भी कर सकते हो। तो ठीक है, पहला प्रॉब्लम देखते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट रीजन y ग्रेटर देन जीरो हैज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट इज V1, and for y less than 0 has a constant potential V2, and V2 not is equal to V1. And a charged particle with momentum P1 is incident at an angle theta 1 on the interface of the two regions. And if the particle has momentum P2 in the region y less than 0, then what is theta 2? सो डायग्राम को देखते हैं। ये है डायग्राम। ये y ग्रेटर देन जीरो रीजियन है जहाँ पर पोटेंशियल V1 है, और एक पार्टिकल है जो कि P1 मोमेंटम से थीटा 1 एंगल पे इंसिडेंट किया, और दूसरे साइड से P2 मोमेंटम है और थीटा 2 एंगल पे ये निकल गया दूसरे साइड से। यहाँ पर पोटेंशियल V2 है। So you have to find what is the correct relation between P1, P2 and theta 1, theta 2. So ऑप्शंस देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई एक कंपोनेंट तो कंजर्व्ड होगा, या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कंजर्व होगा या फिर वर्टिकल कंपोनेंट कंजर्व्ड होगा। ऑप्शन देख के ऐसा कुछ लग रहा है, पर क्या कॉन्सेप्ट है और क्या लॉजिक है देखते हैं। सो इफ यू ड्रॉ द पोटेंशियल, ये कुछ पोटेंशियल का ड्राइंग है। सपोज ये आप y मान लीजिए, y एक्सिस, और ये आप पोटेंशियल का ग्राफ मान लीजिए। सो y लेस देन जीरो द पोटेंशियल इज V2 दैट इज कांस्टेंट, and for y greater than 0 it is V1 that is again constant, and at y is equal to 0 it has a sudden jump from V1 to V2. Okay, so this is like a step potential, एक step potential की तरफ है जो V2 से V1 sudden jump कर रहा है at y is equal to 0 पे। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी इंटू डेल वाई क्यों, द नॉर्मल कंपोनेंट इज वाई कंपोनेंट। सो V1 टू V2 नॉर्मल कंपोनेंट, अगर प्लेन से नॉर्मल जाओगे तो वाई कंपोनेंट इज द नॉर्मल कंपोनेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी इंटू डेल वाई। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी डी वाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करोगे, सो ये है वाई एक्सिस। फॉर दिस रीजियन फॉर y लेस देन जीरो V2 इज कांस्टेंट, V2 कांस्टेंट है। सो अब डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो होगा। एंड सिमिलरली फॉर y ग्रेटर देन जीरो, अब अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो होगा। सो बोथ द रीजन्स हैव जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट इज नॉट जीरो एट y इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो से ये एक स्टेप फंक्शन की तरफ बिहेव कर रहा है। v इज अ स्टेप फंक्शन एट y इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर एक सडन जंप है। सो अब स्टेप फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करते हो तो एक डेल्टा पोटेंशियल होता है। So at y is equal to 0, electric field is like a delta potential. So it is like minus delta y. So at y is equal to 0, electric field एक delta potential की तरफ है जो कि नॉन जीरो है। सो अगर आप नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स देखोगे, f of y that is equal to q into ey, that is minus q into delta y. So normal component of force नॉन जीरो है, fy is नॉन जीरो, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, सो fx is जीरो। Now you can simply apply Newton's law. Newton's law क्या कहता है, that dpy dt is equal to fy, which is non-zero for this case. So dpy dt is non-zero, so py will not be conserved, py यहाँ पर conserved नहीं होगा। But what is about horizontal component? The dpx dt, that is fx is equal to zero. So fx zero है, so px would be conserved, px conserved रहेगा। So what is now the horizontal component of the momentum? The horizontal component for the upper region P1 sine theta 1, and for the region y less than 0 it is P2 sine theta 2. So यहाँ से आप theta 2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, that is sin inverse P1 by P2 into sin theta 1, that is option 4. सो इस प्रॉब्लम के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कौन से डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फोर्स नहीं लग रहा, बट वर्टिकल डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, और एक ही फोर्स लग रहा है, वो है कि y इज इक्वल टू जीरो पे। y इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली पॉइंट वेयर यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज नॉन जीरो। सो y डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, सो py कंजर्व नहीं होगा बट px कंजर्व होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ लुक एट द सेकेंड प्रॉब्लम। ये थोड़ा इजी प्रॉब्लम है और ये शायद हर कोई कर लेगा। सो क्वेश्चन से रेडियो स्टेशन एंटेना ऑन अर्थ सरफेस रेडिएट्स 50 किलोवाट पर आइसोट्रॉपिकली। सो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला डिटेक्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। सो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई नॉट स्क्वायर होता है। यहाँ पर मीडियम का कुछ दिया नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट लेके ही हम चलेंगे, और ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
So what is the average intensity? Average intensity is half epsilon naught c naught square. C is the velocity of the propagating wave. Here we are assuming that c is the velocity of light, not is here is not any medium. So c is the velocity, not you cannot say that it is v. If it is any medium, then you can replace this c by n. N is the refractive index of the medium. So average intensity is average power divided by the surface area. So P is the power delivered and A is the surface area. So now you can put the values given in the question. Power is given as 50 kilowatt, that is 50 into 10 to the power 3. Surface area of the spheres of a 100 kilometer radius, that is 4 pi into 100 kilometer का मीटर में कन्वर्ट कीजिए 100 into 10 to the power 3 square is equal to half c epsilon naught e naught square. E naught is the peak value of the electric field. अब आपको बी नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट. आप इसको डायमेंशनल भी समझ सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो वो होता है क्यू इंटू ई, और अब जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो वो होता है क्यू वी इंटू बी. वी इज द वेलोसिटी. So dimensionally E by B is the dimension of velocity. So here in this case velocity is just c. So it is a non, there no refractive index is given. So velocity is just the velocity of light, that is c. Propagating wave, the propagating wave velocity is c. So अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब बाई 2 इंटू बी नॉट स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. सी का वैल्यू लिखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड अदर्स आर गिवन. सो यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज बी नॉट. बी नॉट इज समथिंग 5.7 into 10 to the power minus 11. So for this question, option 2 will be the most appropriate option. Okay, so yeah, that's it. And आपको कोई सजेशन से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे बताइए. आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू.